So we are starting with economics on a semester 4 lectures now, and in semester 4 there will be three important core paper. One is intermediate microsecond, intermediate macrosecond, and introductory econometrics. So I will be just giving you the overview what we will be providing you in semester 4 and how it will be provided to you. So just in this orientation lecture of semester 4, mainly I will be starting with intermediate microsecond, but just understand what you have to cover in semester 4. So semester 4 the content for core paper is intermediate microsecond. So you have done in semester 3 intermediate micro 1. So continuation of that is in semester 4. Then intermediate macrosecond, and continuity of, you can say, stats you will find in the introductory econometrics. So three core paper, and now the first one is a intermediate microsecond. I will just explain the content. जिसके readings uploaded हो चुके हैं, so readings has been uploaded there. Just see the content part of it, how it is different from the last year's syllabus, what will be the weightage of different unit, and what will be the question paper pattern. So all details are now available. So in the intermediate micro 1 paper, the first unit you can write down in the form of unit. The first unit will be monopoly. Now one important information is that previous year this monopoly unit was chapter was there, but the reference book was different. But now you have to refer it from the Nicholson and Snyder chapter number 14. So chapter number 14 Nicholson and Snyder, again I repeat, this is a change as compared to the previous year. Previous year the reference book was different, chapter was same. So obviously since the reference book is different, so chapter के अंदर जो content है वो slightly थोड़ा vary कर जाता है. That means there are various dimensions taken in the Nicholson aside which were not covered in the old reading. So unit is same, chapter is same, but the reference book is different. Clear? So first unit is monopoly pricing, inefficiency, price discrimination. Second unit, you can keep on writing that number of units. Unit 1 is monopoly. Second unit is general equilibrium. So general equilibrium will be very different as compared to the partial equilibrium. So what you have done in semester 3 was consumer behavior, but in that consumer behavior we explain behavior of a single consumer. So when we explain the behavior of a single consumer, then you have written the utility function, utility from x comma y as. Now utility function के कई form possible है. Utility function could be written as x into y, or it could be written as x plus y. It could be written as minimum of x comma y, x to the power c, y to the power d. So it could be for well behaved, for complement, for substitute, for quasi-linear, for Cobb-Douglas. So there are different utility function. But now in the general equilibrium model, what we have to do, we will be dealing basically with, the model will be called as the 2 by 2 by 2 model. I'm just giving an overview what you can expect in semester 4. That means there are two factors of production, labor and capital, to be allocated to produce two commodity x and y, to be distributed between two persons A and B. So if labor and capital are resources, good x and good y, and to be distributed between A and B. So since there are two persons, so obviously two persons will have different utility function, may have same utility function also. तो अभी तक आपने क्या कर रखा है, एक सिंगल यूटिलिटी फंक्शन लिया था, सिंगल कंज्यूमर का बजट कंस्ट्रेंट था, यूटिलिटी फंक्शन था, उसका चॉइस निकाल रखा है. Now in the general equilibrium we have to take into account the interdependency. So if there are two persons, then utility function of person A could be for well behaved, utility function for the second person could be for perfect substitute. Suppose we are discussing rice and wheat, so one person may be consuming rice and wheat together, तो उसके लिए complement हो गया, other person के लिए वो perfect substitute हो सकता है. So there can be different type of utility function. So what you have done is basically utility function of a person. Now we are dealing with the utility function of two person. So how they are related and what will be the exchange here. तो एक्सचेंज का कंसेप्ट है, एंडाउमेंट का कंसेप्ट आ जाएगा जैसे स्टट्स की क्वेश्चन लिखा था. तो उसकी कंटिन्यूटी, दैट इज यू विल फाइंड कंटिन्यूटी ऑफ कंज्यूमर डिमांड
in a complicated and a different form in the exchange unit. So this will be a vital unit. So very important, and the weightage of this unit is also more. I will explain the weightage, but just write down the second unit as exchange economy. Exchange economy, chapter number 31 and 33 from Hall variant. So chapter 31 and 33 you have to refer from Hall variant. So unit number 2 is this. Third unit is a model of monopolistic competition. Model of monopolistic competition. So monopolistic competition, this unit was there in semester previous year as well, but उससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं होते. मतलब कन्वेंशनली मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन का टॉपिक होता था. तो पास्ट ईयर का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 10 ईयर, यू विल फाइंड वेरी फ्यू. जस्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन विल फाइंड द क्वेश्चन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो फर्म्स विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मार्कअप, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. तो एक्चुअली सेमेस्टर 3 और 4 कंबाइन करके आप देखो तो यू हैव डन ऑल फॉर्म ऑफ मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मेनली यू हैव डन इन सेमेस्टर 3. हियर यू आर डीलिंग विद मोनोपोली and monopolistic. The remaining is the oligopoly. Continuation of that you will find in the semester 5 in the form of game theory. तो oligopoly, imperfect competition, oligopoly और उसके जितने भी models हैं, coordinate, Burton, that will be explained in the game theory chapter now. That means you are studying market structure in 3 different semester. Perfect competition in semester 3, monopoly and monopolistic in semester 4, and oligopoly in semester 5. Clear? Fourth unit is externality. So from externality it is basically the market failure. Clear? देखो continuity जैसे एक टॉपिक क्या रखेंगे. In general equilibrium, when we explain 2 by 2 by 2 model, then 2 factor of production will be allocated to produce 2 product. That allocation has to be Pareto efficient. So what is the meaning of Pareto efficient allocation? We have to understand that. Then 2 goods will be distributed between 2 person A and B. That distribution must also be Pareto efficient. So what is the meaning of Pareto efficient distribution? Distribution को Pareto efficient कहते हैं when it is not possible to make someone better off without making someone else worse off. Then that distribution is called Pareto efficient distribution. If you cannot make anyone better off without making anyone else worse off, but if a distribution is there in which it is possible to make someone better off without making anyone else worse off, then that distribution is not Pareto efficient. So Pareto efficiency we will learn in this unit number 2, and failure of that Pareto efficiency criteria will become the case of market failure. Market fails to allocate resources efficiently. Market fails to distribute goods efficiently. So market failure is basically failure of Pareto optimality. So Pareto optimality we will learn in this unit number 2, and failure of that Pareto optimality we will learn in मार्केट फेलियर टॉपिक. मार्केट फेलियर के एक्चुअल में 3 रीजन होते हैं. वन इज एक्सटर्नलिटी, अदर इज पब्लिक गुड प्रोविजन, एंड थर्ड इज असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. एंड द कॉम्पिटिटिव मार्केट इज सेट टू बी जनरली सेटिस्फाइंग द पैरेटो एफिशिएंसी, बट अगर एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट है तो मार्केट फेल हो जाएगा. पब्लिक गुड्स का प्रोविजन होगा देन मार्केट विल फेल. एंड व्हेन आई से मार्केट, देन विच मार्केट? इट इज द कॉम्पिटिटिव मार्केट. So competitive market will fail. Fail means it will fail to achieve Pareto efficiency. So an important unit will be externality. Then externality, after that public good. So we have to cover basically these 2. And asymmetric information not there now. Asymmetric information आपको नहीं करना. मतलब old syllabus में it was there. 3 रीजन होते थे, एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड और असिमेट्रिक. नाउ वी आर डीलिंग विथ 2, पब्लिक गुड एंड दी एक्सटर्नलिटी प्रॉब्लम. तो ये 5 यूनिट्स हैं. एंड दिस फॉर द पब्लिक गुड अगेन वेरियन और निकोलसन स्टाइडर के चैप्टर नंबर 19. तो रेस्पेक्टिव जो कंटेंट है वो मेंशन्ड है. सो जस्ट सी इट इन, ये डी स्कूल के साइट पे अपलोडेड होगा. उसी सिलेबस को आई हैव शोन दैट सिलेबस in December 2nd 2024.
So the syllabus for meeting was then in December 2nd. Content wise, first unit is monopoly. You have already written that. First is monopoly, Nicholson's rider. Second is general equilibrium, chapter 31 and 33. Third is monopolistic. Fourth one is externality, and fifth one is public good. So although you will find 5 units here, but हर unit के अंदर अगर आप chapter देखें, then you are basically dealing with one chapter, but those chapters are lengthy chapters. Like monopoly itself will take about 5 lecture plus numerical add करने 5 to 7 lecture आपके पास monopoly के हो जाएंगे. Exchange के अंदर भी 5 to 7 lectures. So each chapter will be taking time consuming. There are a lot of content in those chapters. And the weightage is also specified. Just write down the weightage. Unit number 1, that is monopoly, 20%. Second unit, which is major one, which is exchange, 30%. Monopolistic competition model, less content, less weightage. Externality 20% and public good 20%. ठीक है, 20, 30, 10, 20 and 20. And paper pattern, it is suggested that question paper may have 7 questions, out of which students can do any 5. 7 questions will be given and you have to attempt any 5. So obviously there will be no section. ठीक है, प्रायर अगर आप ओल्ड सिलेबस के देखते तो वहाँ सेक्शन डिवाइडेड होते थे. मार्केट स्ट्रक्चर का सेक्शन अलग था और जनरल इक्विलिब्रियम और मार्केट फेलियर सेक्शन अलग है. बट अब सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं है. सो section wise अगर डिवीजन नहीं होता, that means you have an external choice, but each question will have multiple parts. Each question will have multiple parts. Generally 3 parts are there in every question. तो अगर 5 question भी आप कर रहे हैं तो 5 into 3, 15 question you have to attempt round about, and there could be sub parts as well. तो usually 15 to 20 questions होंगे in your question paper that you have to attempt. Clear? So this is for intermediate micro second syllabus. I will start with this micro second, but just see the content for macro as well, because macro का content भी available है. ठीक है, for 25 this macro unit will be having, macro syllabus will be having 3 units. First will be fiscal and monetary policy. Fiscal and monetary policy. So remember, you have concluded it with the microeconomic foundation, inflation and unemployment. Now we are dealing with the fiscal and monetary policy, and this is a new reading. ठीक है, जैसे last year से introduce हुआ है and a little complicated as well. That means we have you are familiar with the IS curve, LM curve, but now you have to deal with the IS curve, Phillips curve you have done, and the monetary rule. So it is IS PC MR model. IS curve for the goods market, Phillips curve for the inflation and employment relation, and the monetary rule. So by combining all 3 we have to formulate monetary and fiscal policy. So reference will be mainly Blanchard chart. Second unit is financial market and crisis, and third is issues in open economy. Issues in open economy, and again an important unit. Mainly you have to cover it from the Salvatore and Dornbush and Fisher. So open economy will take topics like what determine the exchange rate, how exchange rate are determined by purchasing power parity approach or interest parity approach, why rupee depreciates against dollar. You will be able to understand those things by reading these issues in the open economy. And why there will be a balance of payment crisis. If there is a crisis, then how it can be overcome by the policies, or how it will be overcome by the automatic adjustment. What is exchange rate overshooting, why it fluctuates more in the short run, less in the long run. So those things we have to cover in unit number 3, issues in open economy. And obviously the content will be more in this third unit. Clear? और पेपर का पैटर्न, द क्वेश्चन पेपर विल हैव रफली 50% वेटेज फॉर यूनिट 2 and remaining 50% for unit number 3, that is open economy,
and 50 for 1 and 2 combined. So obviously the content is more in the open economy part. Section A obviously जैसे pattern semester 3 का था वैसे ही रहेगा. MCQ will be of 2 marks. वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है. सेक्शन बी के अंदर स्टूडेंट्स विल हैव टू रिक्वायर टू डू 6 आउट ऑफ 8 एंड सेक्शन सी में 3 आउट ऑफ 4. क्लियर? तो दैट विल बी फॉर मैक्रो. तो 3 यूनिट्स एंड 3 सेक्शन इन क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट इज MCQ, second is a 5 marks question, and third section is 10 marks question. Clear? First unit, second unit and third unit. Now you can begin with micro. Unit number 1. So from first page you can write this. Unit number 1, monopoly. Chapter number 14, Nicholson and Snyder. That will be your reference book. Now first of all, write down the content. What do you have to cover in this chapter 14? So content in this chapter number 14. First, it will start with why monopoly arises. Why not all market are competitive? Why in few markets there we will find only one provider? Like why the electricity can be provided only by the one provider? Why there will be one metro? Why not there will be multiple? तो अगर किसी दूसरे गुड्स या सर्विस के मल्टीपल प्रोवाइडर होते हैं तो वाई वी फाइंड वन प्रोवाइडर इन सर्टेन कमोडिटीज और सर्विसेज. तो वाई मोनोपोली अराइजेज, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आर द रीजंस फॉर मोनोपोली. सो देयर आर मेनली 2 रीजन. वन इज द लीगल बैरियर एंड अदर इज द टेक्निकल बैरियर. सो वी हैव टू इलेबोरेट व्हाट इज द लीगल बैरियर and what is the technical barrier. That's simple. Like if government has given some patent right to a pharmaceutical firm to produce a particular drug, तो उस drug का वो single provider हो जाएगा. So that monopoly has been created by the government by creating a legal barrier. तो legal barrier होगा, there will be technical barrier. So we will elaborate that part in this first section. Second, we will take up the profit maximizing price and output decision. So you know the profit maximizing condition, that is MC must be equated with MR, and then we have to calculate the profit. So just as we have done in the perfect competition, we have to do it for the monopoly. So profit maximizing. Third is important one is the monopoly and the resource allocation. So whether in the monopoly resources are allocated efficiently or not, and what is the concept of deadweight loss. तो डेडवेट लॉस का जो कंटेंट है वो ये अगेन एक जेनरिक टर्म है, कई जगह यूज़ होते हैं. डेडवेट लॉस ऑफ टैक्स भी आपने सेमेस्टर 1 के अंदर कर रखा है. डेडवेट लॉस ऑफ प्राइस सीलिंग भी होता है, डेडवेट लॉस ऑफ प्राइस फ्लोर भी है, डेडवेट लॉस ऑफ मोनोपोली भी है. तो डेडवेट लॉस जनरली रेफर्स टू लॉस ऑफ टोटल सरप्लस. सो वी हैव टू फाइंड लॉस ऑफ टोटल सरप्लस इन मोनोपोली एज कंपेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो ऑब्वियसली वी विल कैलकुलेट द टोटल सरप्लस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. We will calculate the total surplus in monopoly, and the loss of that total surplus will be called as the deadweight loss. Frequently asked numerical question is there. So this is topic for mainly a numerical question you can expect. Fourth will be monopoly power explained by inverse elasticity rule. So when you use the monopoly power, so remember monopoly chapter हम पढ़ रहे हैं, but it is not pure monopoly we are discussing कि market के अंदर एक ही provider होगा. Market के अंदर there could be other provider, but even if there are suppose 3 or 4 provider, firm may have some monopoly power. So monopoly power means the extent by which price can exceed marginal cost. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, मोनोपोली का प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से हायर होगा. तो वाई बाई व्हाट एक्सटेंट प्राइस कैन एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज एन इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर. And that index will be measured by the Lerner index, and how it depends inversely on the elasticity of demand. So fourth topic will be basically this. Then fifth one, again it is a theoretical question, why monopolies do not have any supply curve. Unlike perfect competition जहाँ पे आपने पढ़ रखा है कि marginal cost का with the supply curve, monopoly में there will be no supply curve. So why supply curve does not exist for monopoly, it becomes an important question. Then the other topic included in this monopoly, just keep on writing those things in your notebook.
the topic wise, because if you have defined the syllabus very well, if you have defined what are the various content of this chapter, then it becomes very easy for you to approach. Okay, we have done all these topics covered in the reading. So I think you have written first, second, third, fourth and fifth one. The other section in this chapter is all about monopoly pricing. So in the monopoly pricing, one important pricing practice is price discrimination, which means charging different price for same product from different consumer. So why monopolists engage in price discrimination? Obvious reason is monopolists want to earn more profit, and second, monopolists want to transfer consumer surplus from consumer to producer. तो दो इंटेंशन होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, वन टू हैव मोर प्रॉफिट एंड सेकंड टू ट्रांसफर कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम कंज्यूमर टू मोनोपोलिस्ट. एंड देयर विल बी थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री and third degree. I will just give you an example. Like third degree, say price of electricity for commercial use and household use is different. मतलब market को हमने segment कर दिया for household use and the commercial use, and then you are charging different price from different in the different market. That will be third degree discrimination. तो mainly again I have to deal with the numerical. दो अलग अलग डिमांड फंक्शन दे देंगे, कॉस्ट इक्वेशन दे देंगे और दोनों मार्केट का प्राइस कैलकुलेट करना आपको. Second degree is mainly referred as the block pricing. For different block, prices are different. For first 0 to 200 unit, price is this. For 200 to 500 unit, price will be this. Like utilities में जनरली होते हैं, electricity bill होता है, telephone charges हो सकते हैं. First degree is called as perfect discrimination, which means each and every unit will be sold at different price. हर unit का price different होगा. That means if monopolist is selling 75 unit, then there will be 75 different prices. So price discrimination is an important topic for numerical. Two-part tariff is another way of pricing practice. Two-part means one part, let us say like in an amusement park. Once you enter into the park, you pay the entry fee, and for different ride you pay different price. So one part of tariff is entry, second part of tariff depend upon the use. So entry fee you have to calculate and the user charge you have to calculate. Club membership है, मेंबरशिप के लिए आपने एक अलग प्राइस पे कर रखा है और उसके बाद जो यूज़ करेंगे क्लब के फैसिलिटीज़ को उसके लिए अलग प्राइस चार्ज करेंगे. सो देयर आर टू पार्ट ऑफ द टैरिफ. दैट मीन्स व्हेन यू राइट द टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे. वन विल बी द एंट्री फी फिक्स्ड, अदर विल बी डिपेंडिंग अपॉन द यूज. सो इट इज़ पी इंटू क्यू. यूजुअली हम टोटल रेवेन्यू लिखते हैं से पी इंटू क्यू बिकॉज देयर इज ओनली वन पार्ट, बट हियर देयर विल बी टू पार्ट ऑफ द टैरिफ. 8th one will be the regulation of monopoly. 9th is talking about monopoly, product quality and durability. In this section, like cost is generally expressed as a function of quantity. मतलब cost के equation में normally क्या होता है, fixed cost होगा, variable cost होगा. Cost is a function of quantity usually we say, but cost is also a function of advertisement. So cost could be a function of quantity as well as advertisement. Similarly, when you write the demand function, then price is a function of quantity, but price is also a function of quality, or it is also a function of advertisement. तो अब हमारे इक्वेशन में सिर्फ Q नहीं है, Q के साथ साथ A भी है, तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी भी निकालना आना चाहिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एडवर्टीजमेंट भी निकालना आना चाहिए. दैट विल बी कवर्ड इन दिस मोनोपोली सेक्शन जो लास्ट में है. एंड फाइनली जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का न्यूमेरिकल अप्रोच होगा. दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव टू कवर मोर एंड मोर न्यूमेरिकल. और न्यूमेरिकल करते समय एक तो ऑब्वियसली आपके पास रीडिंग हो गई, तो निकोलसन स्नाइडर के चैप्टर 14 के बैक में जो क्वेश्चन है वो आनी चाहिए. सेकेंड, वेरिएंट को भी हम उसके वर्कबुक को यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो रिकमेंडेड नहीं है, बट वी कैन यूज द वर्कबुक फॉर क्वेश्चन पर्पस. उसके कंटेंट नहीं पढ़ना, बट उसका वर्कबुक का जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा. यू डोंट हैव टू सर्च फॉर इट. एंड थर्ड विल बी द पास्ट ईयर क्वेश्चन. ठीक है, तो आपके पास सिलेबस में चैप्टर नंबर 14 में दिस इज ठीक
ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है मोनोपोली फ्रॉम निकोलसन साइड। ठीक है, रीडिंग में आपके पास ये चैप्टर होगा विच विल ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाई मोनोपोली अराइजेस, बैरियर्स टू द एंट्री, टेक्निकल बैरियर एंड द लीगल बैरियर, एंड देन इट विल गो ऑन टू एक्सप्लेन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, चॉइस एंड आउटपुट। जो कंटेंट मैंने लिख रखा वो बेसिकली इस रीडिंग के कंसिस्टेंट आ जाएगा। इनवर्स इलास्टिसिटी रूल, मोनोपोली पावर, then why monopolists do not have a supply curve, there is no supply curve for monopolist. Monopoly and resource allocation, that will be your deadweight loss concept graphically, और उसके भी अलग अलग variants हैं। then monopoly product quality and durability, price discrimination in its various forms, first degree, second degree, third degree, एंड टू पार्ट टैरिफ। ठीक है, वहाँ से ये कंक्लूड हो जाता है टू पार्ट टैरिफ। और फिर चैप्टर रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली इज 1, एंड आफ्टर दैट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर के एंड में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, बट यू विल फाइंड वेरी सिमिलैरिटी कि चैप्टर के बैक में जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसे क्वेश्चन आपको 10 पास्ट ईयर क्वेश्चन में मिल जाता है फाइनल में। Like the question says a monopolist can produce at a constant average cost and marginal cost of 5, और फर्म का डिमांड फंक्शन गिवन है Q इक्वल टू 53 माइनस P। उसके सब पार्ट्स में क्या, व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस एंड क्वांटिटी, कैलकुलेट द प्रॉफिट, what would be the output produced if the market is perfectly competitive, and calculate the deadweight loss। ठीक है, थर्ड पार्ट में you have to calculate the deadweight loss। तो जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल ये चैप्टर के बैक में जो क्वेश्चन है, एंड इफ़ यू सी द क्वेश्चन इन द पेपर, तो क्वेश्चन पेपर पास्ट ईयर का क्वेश्चन है वो आपको सेपरेटली एक अलग फॉर्म में, ये टाइप क्वेश्चन आपको सेपरेटली मिल जाएंगे डिफरेंट प्रॉब्लम सेट के अंदर, कि आपको वो बुक नहीं, यू हैव टू जस्ट फॉलो द ई बुक सेक्शन के अंदर, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन रीडिंग के बैक में है वो क्वेश्चन यहाँ पे सेपरेटली टाइप्ड है, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो चैप्टर नंबर 14 निकोलसन साइडर का क्वेश्चन है, इसी के साथ साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी होंगे आपके उसमें, मतलब ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विल बी इंक्लूडेड इन वन PDF। द रीडिंग के बैक पे जो क्वेश्चन है, वेरिएंट के बैक में जो वर्कबुक के जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ वो है, प्लस जो पास्ट ईयर के अंदर आ रखा है और जो एडिशन सोर्सेज होंगे, दैट मीन्स ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विल बी क्लब्ड इन वन PDF। एंड पास्ट ईयर वाले जो भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक आई विल जस्ट शो वन क्वेश्चन हियर, ये 2000 पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन में लाइक जो क्वेश्चन रीडिंग के बैक का, और यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अ मोनोपोलिस्ट फेसेस अ मार्केट डिमांड कर्व एंड हैज गिवन अ कॉस्ट फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, फाइंड आउट द प्रॉफिट मैक्सिमम प्राइस एंड क्वांटिटी एंड द प्रॉफिट इन द मोनोपोली, दैट इज वन पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस एंड डेडवेट लॉस ड्यू टू मोनोपोली बिहेवियर। कंज्यूमर सरप्लस निकाल देना, डेडवेट लॉस निकाल देना। तो डेडवेट लॉस कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द डेडवेट लॉस। तो जैसे द पर्पस वाज जस्ट टू शो द लिंक कि रीडिंग के बैक में जो क्वेश्चन है और पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या लिंक है। तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड फ्यू क्वेश्चंस मेनली फ्रॉम द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पार्ट, टू पार्ट टैरिफ पार्ट, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है। एक शेयर का क्वेश्चन भी देखें तो मोनोपोलिस्ट सर्व टू डिफरेंट मार्केट, $2 डिमांड फंक्शन गिवन है, थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन से कैलकुलेट करना है। तो ऑल 3 पार्ट्स वर फ्रॉम द मोनोपोली सेक्शन। क्लियर? So now we can begin with the content part. Obviously I will start first of all with the basics, assuming that कि सेमेस्टर 3 के अंदर जो आपने पढ़ रखा है, इन केस इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट या आपने प्रॉपरली उसको नहीं कर रखा, तो ऑब्वियसली बिकॉज दैट बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट। जैसे रिमेंबर व्हेनेवर यू यूज द वर्ड मार्केट स्ट्रक्चर, द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक। वी आर स्टडिंग ए प्रोडक्ट स्पेसिफिक मार्केट। प्रोडक्ट बदल जाएगा तो मार्केट डिफरेंट हो जाएगी। और market has been classified based upon the number of seller of that product. So if in any product we find only one buyer in the market,
then you call that market as monopoly. If there are two buyers or more than one but not large in number, then it is called as oligopoly. Oligo means few. Exactly दो seller होंगे, you call it duopoly. Duopoly is part of oligopoly. If we find a large number of sellers but all sellers are producing differentiated product, then it is called monopolistic. If there are large number of sellers but all are producing identical product, same product, then it is called perfect competition. So perfect competition, large number of sellers producing identical product. Monopolistic, large number of sellers producing differentiated product. Product differentiation है. So you will cover that topic in unit number 3, monopolistic model. Product differentiated होना चाहिए, but they must be not that much differentiated कि वो product ही अलग हो जाए. Like for example, if I say the market for car, is it oligopoly or monopolistic? कार एक सिंगल कमोडिटी नहीं है, उसके अंदर भी वेरियस कैटेगरीज हैं. लग्जरी कार का मार्केट अलग हो जाएगा, स्मॉल कार का मार्केट अलग हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट. तो दैट मीन्स in order to include the product in a particular market, the product must be technical and economic substitutes. Economic substitutes means they must have very similar price. Then only you can include that product in a market. In oligopoly market, there are few sellers, but they may be producing same product, may be producing differentiated product. अब oligopoly content you have to cover in semester 5. ये आप semester 5 में पढ़ेंगे. Perfect competition you have done in semester 3. In semester 4 you are dealing with monopoly and monopolistic. ठीक है, currently ये monopoly और monopolistic है. That is your unit number 1 and unit number 3. ये दो कंटेंट आपको सेमेस्टर 4 के अंदर पढ़ना है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का. क्लियर? सो जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक. प्रोडक्ट डिफरेंट हो गया तो मार्केट डिफरेंट हो जाएगा. नाउ विद दैट बेसिक, obviously in any market the purpose of the firm is to maximize their profit. So what is the profit maximizing condition? So state profit maximizing condition. So already you know that condition, but again I will repeat that. प्रॉफिट को पाई के सिंबल से डिनोट किया है. इट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. सो इफ यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, तो मैथमेटिकली यू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन एंड इक्वेट इट टू जीरो मैक्सिमाइज करने के लिए, एंड सेकंड डेरिवेटिव हैज टू बी नेगेटिव. सो फर्स्ट डेरिवेटिव equated to 0, so you differentiate the total revenue with respect to quantity and differentiate total cost with respect to quantity. Derivative of total revenue with respect to quantity is marginal revenue. Derivative of total cost is marginal cost. So MR minus MC equal to 0, which means MR is equal to MC. Clear? So this is your first condition, first and necessary condition. Profit will get maximized only when marginal revenue is equal to marginal cost. Second derivative has to be less than 0, negative. So once you differentiate any term, you get actually slope of that. So if you differentiate TR, you get MR. So you can say that MR is slope of TR and marginal cost is slope of total cost. So second time derivative का मतलब है, now you will get the slope of MR and slope of MC. So derivative of MR with respect to quantity minus derivative of MC with respect to quantity, this term has to be less than 0, which means negative value बड़ी होनी चाहिए. Slope of MC should be greater than slope of MR. Slope of marginal cost must be greater than slope of marginal revenue, या simply जैसे कहते हैं MC must cut MR from below. So just remember 2 points. Profit will get maximized when following 2 conditions are satisfied. First, MR equal to MC, and second, slope of MC greater than slope of MR. This is your first
बेसिक पॉइंट, ये आपने ऑलरेडी सम 3 के अंदर कर रखा, बट आई हैव रिपीटेड दैट. सेकेंड पॉइंट इज दैट whenever you calculate this profit maximizing quantity, be sure that firm is having at least operating profit. I will explain the second basic point here. Profit is again revenue minus cost. Revenue के लिए price into quantity. Price is always equal to average revenue. Price हमेशा AR के बराबर होता है. You can see that. जैसे if you write total revenue, it is P into Q. So once you calculate average, you divide total revenue with quantity, which means P into Q divided by Q. So Q will cancel out. Average revenue और price हमेशा same होते हैं. That is why average revenue curve is called demand curve. So average revenue into quantity is total revenue. Similarly, average cost into quantity will become total cost. So profit is AR minus AC into quantity. How you will get this quantity? First of all, to get this quantity you will have to apply the profit maximizing condition. MR को MC से equate करेंगे, then you will get this quantity Q. But the term inside the bracket may be 0. If they are equal, it could be negative, it could be positive. So there are 3 possibilities. Number 1. If AR is equal to AC, so you will say that there is no profit. No profit, no loss condition is called as break even. But break even point पे रखेंगे firm is always having normal profit. तो normal profit condition ये AR equal to AC. और ध्यान देगा, in place of AR you can always write price. So P equal to average cost. Second or B point, if AR is greater than AC, so if AR is greater than AC, certainly this number will be positive. So firm is having profit in excess of the normal. You can call it supernormal profit or simply monopoly profit. Third condition is most important. If average revenue is less than average cost, if AR is less, AC is more, then this number will become negative. Negative profit means firm is having loss. So now question is, if there is loss for a firm, what firm will do? What monopolist will do? Remember, monopolist could be making loss. So in the case of loss, there are 2 possibilities. Firm may continue to operate or firm may shut down. और ये concept किसी भी market में apply करना है. Monopoly, monopolistic, oligopoly, in any market. So if there is a loss condition, then there are 2 possibilities. Firm may continue to operate or firm could shut down. So when firm will continue to operate and one firm will shut down, the decision depends upon whether total revenue is greater than total cost, rather total variable cost. Total revenue is greater than total variable cost, or total revenue is less than total variable cost. डिसीजन वेरिएबल पे डिपेंड करता है, फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता. फिक्स कॉस्ट तो एनी हाउ इनकर करना होगा, प्रोडक्शन बंद करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट रह जाएगा. इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द वेरिएबल कॉस्ट, देन फर्म विल कंटिन्यू टू ऑपरेट. And if revenue is less than variable cost, that means your revenue is not that much enough so that you can cover your variable expenses also, like electricity bill, salary and so on. If it is not able to cover the variable cost, then temporarily production will be shut down. So if you can just divide this both side with the quantity, you can say TR by quantity will price greater than ABC, and here price less than ABC. So when firm will shut down, firm will shut down when price is less than ABC, and when firm will continue despite loss if price is more than average variable cost. याद रखने का सिंपल तरीका होता है, firm will continue to operate if firm is having operating profit. अगर firm को operating profit मिलेगा तो firm operate करती है. And what is operating profit? It is revenue minus total variable cost. तो क्लियरली अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है
So for that purpose revenue has to be greater than the TBC. Dividing it by quantity, you say that price has to be greater than the ABC. So P greater than average variable cost means firm will be having operating profit, so firm will continue to operate despite loss. तभी कहते हैं शटडाउन प्राइस. शटडाउन प्राइस वो प्राइस होगा जहाँ पे प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी द मिनिमम पॉइंट, एबीसी का जो मिनिमम पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द शटडाउन प्राइस. तो दिस कंसेप्ट विल रिमेन सेम इन एनी मार्केट. सो यू हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट इन सेमेस्टर 3. आई हैव जस्ट रिपीटेड दैट, सो इन केस इफ यू हैव फॉरगॉटन दैट बेसिक. ये कंटेंट आपको हर मार्केट के अंदर याद रखना है. क्लियर? So I repeat the first condition, MR equal to MC, and second, slope of MC greater than slope of MR. Firm will continue to operate only if firm is having operating profit, which means revenue has to be greater than the total variable cost, or price has to be greater than the total variable cost. Clear? अब इस कंटेंट को बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं गिवन एनी क्वेश्चन. सो गिवन एनी numerical problem, it is included in every lecture. It is not part of separate कि आप purely theory किसी lecture के अंदर करें. In every class we will be dealing with few numerical so that you can relate to what you have done in this topic. तो I will just give you an example. ये reading के अंदर explain example के अंदर है, solve example है. But you can just carry forward this numerical example, and the same problem we will be using when we explain for the price discrimination topic, so that you can relate कि okay without discrimination ये हो रहा था, after discrimination ये हो रहा है. So you can just apply that concept. So given any demand function is given as Q equal to 2000 minus 20P, and total cost function is given as 0.05 Q square plus 10,000. ठीक है, पहला डिमांड फंक्शन गिवन है और ये कॉस्ट फंक्शन गिवन है. जैसे भी मैंने शो किया था पास्ट के जो क्वेश्चन थे वहाँ भी डिमांड फंक्शन गिवन होगा और कॉस्ट फंक्शन गिवन होंगे. एंड फर्स्ट पार्ट विल ऑलवेज बी फाइंड आउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, प्राइस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट. यू कैन राइट दैट. फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, प्राइस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट. And then see the solution. See, first of all, whenever demand function is given in this form, you have to convert it. That means you have to make it inverse. मतलब you have to make it P equal to what? Because when you write total revenue P into Q करना है, तो मुझे P की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, Q की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. रीज़न, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी करनी है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. का पहला काम है डिमांड फंक्शन को इन्वर्स करके लिखोगे आप. सो विल राइट 20P इज इक्वल टू 2000 माइनस Q. सो P विल बी इक्वल टू 20 से डिवाइड कर दिया, दैट विल बी 100 माइनस पॉइंट. ठीक है, ये Q बाई 20, 100 माइनस Q बाई 20. ठीक है. नाउ दिस इज योर डिमांड इक्वेशन. आइदर आप पूरा का पूरा प्रॉफिट फंक्शन लिख करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट दैट विल बिकम लेंथी बिकॉज उसमें रेवेन्यू भी आएगा, कॉस्ट भी आएगा. ऑन द सेकेंड अप्रोच है कि आप फाइंड MR सेपरेटली एंड फाइंड MC सेपरेटली एंड देन इक्वेट इट. सो फर्स्ट राइट डाउन द टोटल रेवेन्यू P into Q. So in place of P you are writing 100 minus Q by 20 into quantity. Easy question है. So that will be 100 Q minus Q square by 20, and then calculate marginal revenue from there. So to find marginal revenue you have to differentiate this. So 100 Q का derivative 100 and Q square by 20, so it will become Q by 10. ठीक है. Marginal revenue is 100 minus Q by 10
and what will be the marginal cost. मार्जिनल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है. टोटल कॉस्ट का कंपोनेंट देख लीजिए पहले. टोटल कॉस्ट इज गिवन एज 0.05 क्यू स्क्वायर प्लस 10,000. सो 10,000 बिकम द फिक्स कॉस्ट, डिफरेंशिएशन 0 हो गया. 0.05 क्यू स्क्वायर, सो इट विल बिकम 0.1 क्यू. 0.1 क्यू. For profit maximization, for profit maximization equate marginal revenue with marginal cost. So 100 minus q by 10 is equal to 0.1 q. और यहाँ से q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी. ठीक है, यहाँ से q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन इट विल कम आउट टू बी 500. क्वांटिटी विल बी 500. क्वांटिटी 500 आ गई तो उसके बाद प्राइस कैलकुलेट करना. प्राइस के लिए हमेशा डिमांड फंक्शन यूज़ करेंगे. तो व्हाट यू हैव रिटन द डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन इज p इक्वल टू 100 माइनस q बाई 20. तो q की जगह यहाँ 500 लिखते हैं. 500 बाई 20. तो p इक्वल टू 100 माइनस q बाई 20 था. So 100 minus 500 by 20. So price will be 75. Second answer will be this. अब आपको प्राइस मालूम है, क्वांटिटी मालूम है. So now you can easily calculate the amount of profit. So what will be the profit? Revenue will be P into Q. So 75 into 500. Cost is 0.05 Q square plus 10,000. So this is 0.05 q is 500 square plus 10,000, and therefore profit, difference of revenue and cost. इस एग्जाम्पल में ये प्रॉफिट 15,000 है. ठीक है, इफ़ यू डू द कैलकुलेशन राइट इट विल कम आउट टू 15,000. कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल का स्टार्ट होगा उसका ए पार्ट ये रहना है. व्हाट विल बी द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, प्राइस एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. अब इसे अप्लाई अगर आप किसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो एप्लीकेशन साइड में वन पार्ट इज you have to calculate the profit maximizing equation and then compare it with the perfect competition. And once you compare it with the perfect competition, then you will find that there is a loss of total surplus, and that loss of total surplus will be termed as the deadweight loss. I will just in this introductory first lecture I will just explain what you are expecting in the paper and what will be the pattern of the discussion. So we have to cover the theory part as well as the numerical part. So we will take just one case. See, when we calculate the amount of deadweight loss, so to calculate the amount of deadweight loss, and why it is called as deadweight loss. Deadweight loss is the loss of total surplus. So we have to calculate total surplus in monopoly and total surplus in perfect competition. And total surplus will be summation of consumer surplus and producer surplus. And this is also referred as the inefficiency in monopoly. Inefficiency in monopoly. Inefficient allocation of resource in the monopoly. So we are basically comparing two things here, perfect competition and the monopoly. Or basic point here, whenever any demand function is given and the supply curve is given, supply curve actual में further timing assume करेंगे वो marginal cost है, although monopoly का कोई supply curve नहीं होता, but for this topic only we will assume that marginal cost is the supply curve. So once price is determined, the area above price and below the demand curve will be forming consumer surplus, and the area below price and above supply curve, this one, will be producer surplus. So consumer surplus area you have to calculate, producer surplus area you have to calculate, and then add these two to get the total surplus. So we will have to calculate total surplus in monopoly, we have to calculate total surplus under perfect competition. ठीक है. Now what is the different here and the basic again approach.
When you write the total revenue, it is P into Q. So if I say calculate marginal revenue, तो marginal revenue अगर आप calculate करेंगे then you will differentiate P into Q. अब P into Q को अगर differentiate करना है तो remember price is not constant along the demand curve. So if you are differentiating P into Q with respect to Q, you have to apply the product rule. So first term P into derivative of second term, that is dq by dq, वो 1 हो गया, that will be 1, plus second term Q into derivative of first dp by dq. Again I repeat, product rule के accordingly हमने P into Q को differentiate किया, then you will write MR is equal to P plus Q into dp by dq. अब यहाँ पे दो पार्ट कर लीजिए. अगर मैं कह रहा हूँ मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगे एंड वन फर्म एक्ट एज प्राइस टेकर. दैट मीन्स फर्म का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए प्राइस कांस्टेंट है. तो जब प्राइस कांस्टेंट हो गया तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन dp बाई dq ये नंबर एक्चुअल में ज़ीरो हो जाता है. प्राइस कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ ज़ीरो हो गया, तो अगर ये नंबर ज़ीरो हो गया तो प्राइस विल बिकम इक्वल टू MR. तभी परफेक्ट कंपटीशन में क्या करते हैं हम, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म इज़ अ प्राइस टेकर और जो प्राइस की वैल्यू होती है वही वैल्यू MR की वैल्यू होती है. तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज इक्वल टू MR, बट वाई प्राइस इज इक्वल टू MR? बिकॉज वो dp बाई dq का नंबर ज़ीरो है, दैट डेरिवेटिव इज ज़ीरो, बट नॉट इन मोनोपोली. मोनोपोली में फर्म्स आर नॉट प्राइस टेकर. एक्चुअली दैट dp बाई dq इज नेगेटिव, डिमांड का नेगेटिवली स्लोप्ड है. तो dp बाई dq अगर नेगेटिव है, अगर इफ दिस नंबर इज नेगेटिव, सो प्राइस माइनस समथिंग विल बी MR. तो प्राइस माइनस समथिंग विल बी MR, दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेस देन प्राइस. एंड मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन प्राइस मीन्स इफ यू हैव द डिमांड कर्व देन मार्जिनल रेवेन्यू लाइन विल बी लोअर बिलो दैट. डिमांड कर्व अगर हमारा ऊपर वाला होगा, इफ दिस योर डिमांड कर्व, देन मार्जिनल रेवेन्यू लाइन विल बी दिस MR लाइन. तो प्राइस और MR डिफरेंट होता है मोनोपोली में, बट प्राइस और MR इक्वल होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन. सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन यू कैन राइट P इक्वल टू MC बिकॉज प्राइस itself is MR, but you can't write that same thing in monopoly because price is not equal to MR in monopoly. So just that basic point, just apply that concept to solve the further question. See, if there is a demand function equation given to you, from that demand function you can calculate the marginal revenue line. ठीक है, if this is the demand function given, you can calculate the marginal revenue line. और डिमांड कर्व और MR अलग अलग होगा ओनली इन मोनोपोली. परफेक्ट कंपटीशन में दे आर सेम. If I consider marginal cost as constant, it is not necessary, but I will take in fact both case, constant भी लेंगे और rising भी ले सकते हैं. अगर हमसे constant है, अब मान लिया यहाँ पे मुझे solution देना है for what is happening in monopoly. And what happens in perfect competition. And we are calculating consumer surplus, producer surplus and total surplus. ठीक है, बस ध्यान देना. मोनोपोली में you have to equate MR with MC, and in perfect competition you have to equate price with MC. So first perfect competition. Under perfect competition price means demand curve, P equal to MC का पॉइंट ही हो जाएगा. तो this will be the profit maximizing quantity. I am writing QC, C for this competition, and price equal to MC, so it is PC. For monopoly, MR equal to MC. MR equal to MC will be here. MR equal to MC. So monopoly will produce less quantity, and monopoly will charge price from the demand curve. So monopoly price will be this PM. अब जो भी स्पेस यहाँ दिख रहा है उसको मार्क कर दिया मैंने, A, B, C, D, E. Now just fill that table.
First, for perfect competition. So under perfect competition, how much is consumer surplus? I said consumer surplus is area above the price and below the demand curve. Above the price, so price के ऊपर का area लेना है, below the demand curve. Perfect competition quantity is this QC. So you have to take area above it. So you will say all area A, B, C, D, E, all are included in consumer surplus. What is producer surplus? Producer surplus is area below the price and above the supply curve. Supply curve here means MC. But यहाँ price और MC दोनों equal है. If they are equal, that means there is no gap, there is no area in between. So producer surplus is 0. So the total surplus will be A plus B plus C plus D plus E. ठीक है? Now come to the monopoly. In monopoly, price is PM, this price. So if this is the price, then area above that price. So area above that price will include A and B. So consumer surplus in monopoly is A plus B only. So what is the loss of consumer surplus? Loss of consumer surplus is C, D and E. That will be the loss of consumer surplus. And which area is producer surplus? It is area below the price and above the supply curve, marginal cost. तो इस एरिया के MC से ऊपर लेना है और प्राइस के नीचे, तो C और D. You will not take E because quantity monopoly का QM है. So you have to consider only up to this. So that will be C plus D. So what is the total now? A, B, C and D. Therefore, how much is the overall loss in monopoly? The overall loss in monopoly will be the area E, and this area is referred as deadweight loss. अब अगर यहाँ पे आप deadweight loss का area calculate करते हो, then to calculate the area of this triangle, to calculate area of this triangle, you will say half into base into height. Base means difference of quantity and height means difference of price. So it is half into QC minus QM into PM minus PC. Deadweight loss calculate करने के लिए you can use this formula. It is half into difference of quantity multiplied by difference in price. But you have to be careful. This formula is not universal that you can apply in all the cases. You can apply this formula only if marginal cost is constant. It is a horizontal line. Just write that information. Use this formula only if marginal cost is constant. So natural question is, if it is not constant, how to calculate? So I will solve that. I will give you another example how to do it. कंज्यूमर सब डेडवेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये फॉर्मूला पर अप्लाई करते हैं. अब ये क्वेश्चन आपके रीडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है. विल जस्ट शो दैट क्वेश्चन. ये क्लियर है यहाँ तक? मोनोपोली का सरप्लस निकालना है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का सरप्लस निकालना है. मतलब मेनली यू हैव टू सॉल्व फॉर मोनोपोली प्राइस क्वांटिटी एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस क्वांटिटी, देन इजीली इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ डेडवेट लॉस. इसको आप पहले फर्स्ट प्रॉब्लम से रिलेट कर लीजिए. ये चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है. चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 1. दिस बुकलेट में अगेन यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन. दिस अ मोनोपोलिस्ट कैन प्रोड्यूस एट कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. तो मोनोपोलिस्ट का एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट गिवन है. AC इक्वल टू MC इक्वल टू 5. तो कांस्टेंट MC हो गया. यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला. डिमांड फंक्शन इज Q इक्वल टू 53 माइनस P. अगेन आई रिपीट, क्वांटिटी के फॉर्म में अगर गिवन होगा आपको उसे प्राइस के टर्म में लिखना पड़ेगा. तो विल राइट P इक्वल टू 53 माइनस Q. ये फंक्शन हो गया. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस क्वांटिटी मोनोपोलिस्ट का निकालना है, परफेक्ट कंपटीशन का निकालना है एंड डेडवेट लॉस बताना है. डेडवेट लॉस 53 माइनस Q. P equal to 53 minus Q and average cost equal to marginal cost equal to 5. What you will do is this under perfect competition. So we know that under perfect competition price is equal to marginal cost. In place of price write down 53 minus Q, marginal cost is 5. Therefore quantity will become 48.
क्वांटिटी 48 होगी, और प्राइस MC के बराबर है विच इज़ 5, सो दिस इज PC एंड QC। एक आंसर तो आपका ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन का। देन व्हाट हैपेंस इन मोनोपोली, जस्ट पैरेलल यहाँ पे in monopoly you have to equate MR with MC, so you have to calculate MR now. For that purpose write total revenue as P into Q. In place of P write down 53 minus Q into Q. 53Q minus Q square is TR. Differentiate it to get MR. 53Q derivative is 53 minus Q square will be 2Q, and then equate MR with MC. 53 minus 2Q is equal to 5, so 2Q is 48, quantity will be 24, quantity 24 होगी। 24 की वैल्यू को डिमांड फंक्शन में डाल देंगे Q की जगह, मतलब इस जगह, therefore price will become 29, प्राइस विल बी 20, क्वांटिटी की जगह यहाँ 24 लिख दीजिए, तो प्राइस विल बी 29। ठीक है, ये सेकेंड आंसर हो गया। सिंस अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट गिवन है, यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला, so you can calculate deadweight loss as half into QC minus QM into PM minus PC. 48 minus 5, क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है, क्वांटिटी डिफरेंस इज 48 एंड 29, प्राइस इज 29 minus 5. Quantity is there, just a correction, this quantity is 24, so it is 24 into 24, so half into 24 into 24, that is 288. ठीक है, तो जो रीडिंग के बैक में जैसे क्वेश्चन गिवन है, सिमिलर पैरेलल टू दैट यू विल फाइंड अ क्वेश्चन इन द पास्ट ईयर आल्सो। पास्ट ईयर का क्वेश्चन जैसे अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये पास है क्वेश्चन पी वाई क्यू। तो जो कंसेप्ट अभी रीडिंग के बैक का क्वेश्चन किया उसके बेसिस पे आप ये सॉल्व कर सकते हो। डिमांड फंक्शन गिवन है वैसे ही, Q इक्वल टू 30 माइनस पी, आपको P इक्वल टू 30 माइनस क्यू करना है। ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है, हाफ क्यू स्क्वायर, फाइंड आउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। सो दिस पार्ट यू कैन सॉल्व, एंड सेकेंड पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट डेड वेट लॉस। अगेन द एडवांटेज दैट मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन एज कांस्टेंट, तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे गिवन है हाफ क्यू स्क्वायर, तो हाफ क्यू स्क्वायर गिवन है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी Q। दैट मीन्स इफ Q इज 1 देन मार्जिनल कॉस्ट इज 1, इफ Q इज 2 देन मार्जिनल कॉस्ट इज 2, इफ Q इज 3 देन मार्जिनल कॉस्ट इज 3। तो यहाँ पे वो सेम फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो रीडिंग के बैक का जो क्वेश्चन है वो तो आपने कर लिया फॉर्मूले बेसिस पे, अब उसको अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो यू हैव टू अप्लाई दैट कंसेप्ट in a different form. You cannot apply that, use that formula. So how to solve this question? So if it is a marginal cost is not constant, then what you have to do? Just see this. Make case number 2. If marginal cost is arising होगी तो क्या करेंगे? पहले जो भी डिमांड फंक्शन गिवन होगा उस डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंगली करोगे आप, और मार्जिनल कॉस्ट अगर राइजिंग है तो ये लाइन आप पॉजिटिवली स्टॉप्ड हो गई, बाकी रेस्ट ऑल विल रिमेन सेम। P इक्वल टू MC, दिस विल बी दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व।
P इक्वल टू MC का अपॉन कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से प्राइस लिखेंगे. दिस इज कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड कॉम्पिटिटिव क्वांटिटी. MR इक्वल टू MC, this will be monopoly quantity and price will be determined from demand curve, monopoly price. Difference अब सिर्फ ये होता है कि if marginal cost would have been constant, तो constant अगर marginal cost given है, constant marginal cost अगर given होता तो लाइन यहाँ पे horizontal होती. अब अगर ये horizontal लाइन होता तो ये एरिया deadweight loss कन्वर्ट हो गया, this one. But if marginal cost is not horizontal but positive, तो this area as well as this area. तो अब आप वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यू नीड दिस साइड, दिस विल बिकम द बेस, बट दिस इज नॉट PM माइनस PC ओनली. तो यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट इन एडिशन टू दैट. आपको इस पॉइंट की नंबर जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 10 नंबर. ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना फॉर्मूले को. सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फंक्शन पहले लिख लेंगे. Q इज इक्वल टू 30, ये पास का क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लीजिए. Q इक्वल टू 30 माइनस P एंड मार्जिनल कॉस्ट इज हाफ Q स्क्वायर. ठीक है, जस्ट मार्क P बाई Q एंड जस्ट कॉपी द इक्वेशन. Q is equal to 30 minus P and cost function given है half Q square. तो again first of all solve for perfect competition. P equal to MC करेंगे. Price is 30 minus Q and marginal cost will be Q. So that will be 2Q is equal to 30. Quantity will be 15. And price is equal to marginal cost is Q. Price equal to MC. ठीक है, यहाँ से आप marginal cost लिखोगे Q और इसे इन्वर्स कैले करेंगे P इक्वल टू Q माइनस 30 माइनस Q. ठीक है, पहले मोनोपोली के लिए सॉल्व करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन के लिए, एंड देन सॉल्व इट फॉर मोनोपोली. ना सॉल्व इट फॉर मोनोपोली. ठीक है, क्वेश्चन में जिस पैटर्न जो भी प्रॉब्लम आपने किया है उसको कंसेप्ट है उसको फॉलो करते जाओ. परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस क्वांटिटी निकाल देना है और मोनोपोली का प्राइस क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे. मोनोपोली के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट TR P इंटू Q, 30 माइनस Q इंटू Q, 30Q माइनस Q स्क्वायर एंड देन MR 30 माइनस 2Q. then equate MR with MC. 30 minus 2Q is equal to Q, 3Q is equal to 30, quantity will be 10. क्वांटिटी अगर 10 है तो प्राइस विल बी 20. ठीक है, ये मोनोपोली के लिए हो गया और ये परफेक्ट कंपटीशन का. अब आफ्टर दैट यू हैव टू प्लॉट इट, ग्राफिकली उसको प्लॉट करेंगे, बिकॉज डेड वेट लॉस अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट विदाउट प्लॉटिंग. सो प्लॉट द डिमांड फंक्शन फर्स्ट. सिंस इट वॉज P इक्वल टू 30 माइनस Q, Q ज़ीरो करेंगे तो प्राइस 30 हो जाएगा, P ज़ीरो करेंगे क्वांटिटी 30. सो दिस पॉइंट विल बी 30 and 30. MR लाइन यूजुअली इसको बाइसेट करता जाएगा, मतलब अगर ये पॉइंट 30 होगा तो ये एग्जैक्टली 15 आना चाहिए. एंड देन मार्जिनल कॉस्ट इज Q, तो Q1 marginal cost 1, Q2 marginal cost 2, which means you have to draw it at 45 degree line. ये पॉइंट मैंने कहा परफेक्ट कंपटीशन के लिए आ रहा है, तो परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी कितनी आ रही है 15 और 15. परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी 15 और 15 है.
क्वांटिटी 15, प्राइस 15, और मोनोपोली में क्वांटिटी 10, प्राइस 20। मोनोपोली के लिए ये नंबर हो गया, क्वांटिटी इज 10, प्राइस इज 20। आपको इनफैक्ट ये एरिया कैलकुलेट करना है डेड वेट लॉस के लिए। अब ये एरिया निकालने के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए। अब एट दिस पॉइंट क्वांटिटी इज 10, तो एट दैट पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट विल आल्सो बी 10। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्वांटिटी के बराबर है, तो क्वांटिटी के बराबर है मतलब आइदर आप उस क्यू की वैल्यू जो 10 आ रही है उसको आप एमसी में पुट कर दो या एमआर में पुट कर दो, दोनों का आंसर सेम आना है। तो दिस नंबर विल बिकम 10. Now you can calculate half into this distance will become 20 and 10, so gap is 10, and base or this height is 10 और 15 का gap 5, तो 50 upon 2 25। ठीक है, डेड वेट लॉस कैलकुलेट हो गया। तो दोनों ही तरीके आपको मालूम है कि इफ मार्जिनल कॉस्ट इज कांस्टेंट देन व्हाट यू हैव टू डू, इफ एमसी इज नॉट कांस्टेंट दैट व्हाट यू हैव टू डू। क्लियर? So I think in this first lecture you just you must know what will be the approach. So approach will be mainly a numerical approach along with the theory. It is not that theory will not come, but the weightage for the numerical and application based question will be more as compared to the theory. Resource allocation, dead weight loss, ये question theory में भी पूछा गया but more regularly asked in terms of the numerical one. So we'll explain the theory also along with the numerical. So just to recap what we have done in this lecture, we will explain in the next class why monopoly will arise. That means we will explain, start with the theoretical part. So why monopoly will arise, profit maximizing condition you have written in terms of numerical but not the graphical one. So we will cover the graphical description of it. Monopoly and resource allocation and how to calculate dead weight loss. You know how to calculate it, but we have to explain what is the meaning of that. Why it is called as dead weight loss, what is the inefficiency of monopoly. So that point we have to elaborate. So next will be basically again the theoretical description and then again the numerical part of it. So it will take about I will say 5 to 6 lecture to cover the monopoly section. Or each and every topic के अंदर if you have solved one question, we have solved one question from the past year, we will solve more question if there are different or complicated functions. Remember plus, so far we are dealing with a straight line demand function. It is not always that demand function will be straight. It could be non-linear. Now if it is non-linear then it requires more complicated mathematical interpretation. That means यहाँ तो हमने डेड वेट लॉस ट्राइंगल या एरिया के फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। इफ इट इज नॉन लीनियर तो फिर ट्राइंगल या रेक्टेंगल का एरिया नहीं बनेगा। देन यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दोज थिंग्स वी आर कीपिंग इट फॉर दिस न्यूमेरिकल पार्ट सेपरेट। क्लियर? So we will continue with this in the second class with why monopoly arise and profit maximizing output. Clear? So we have started with the first unit, monopoly. So monopoly and that means the second unit is basically exchange, but first and third is market structure. Second, fourth और fifth उसकी continuity होगी, exchange, externality and public good. ठीक है? So I think can I repeat this content of micro has 5 units: monopoly, general equilibrium, monopolistic model, externality and public good. And the reading for this year is different as compared to the last year. Okay, so be careful when you take a note of your seniors or take the class notes or any other note from the senior, and when you go for the past year question as well. तो कंटेंट यहाँ पे डिफरेंट है। निकोलसन स्नाइडर की रीडिंग दोबारा से इंट्रोड्यूस हो गई है एज वेल एज द वेरिएंट, एंड प्रीवियस ईयर इट वाज अ डिफरेंट रीडिंग. So we'll continue with this in the next lecture. Thank you.